So once again I would like to welcome all my students to my YouTube channel Anjana's Education. Today we are discussing the very famous poem A Psalm of Life, and I would like to suggest you all that you must watch my previous video which was based upon A Psalm of Life. I told you what is Psalm. Psalm कहले एक गीत संगीत एक मंत्र बा आमे कहबा गोटे लाइफ रो गोटे लेसन. That is what the meaning of Psalm. संगीत स्तोत्र मंत्र जहाँ भी किसी कोई परिबा. So here there are two characters, a young man and a psalmist. हमें कोई परिबा psalmist जने अछंती. A Psalm of Life which was published in the October 1838. एटा 1838 मसिया प्रकाशित होइथिबा गोटे poem which was written by the person H.W. Longfellow, whose full form and full name is Henry Stoddard Longfellow. So we are moving to the very first stanza that we will come to know about a life of a person. So here we are going to start. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers. Slumber बोल कोइले निद्रा, हल्का निद्रा व निद्रा, and things are not what they seem. Actually, a number of persons are there in the society. Different categories people live in the society, and they don't have any kind of meaning of life. So they are searching for meaning of the life. So जीवन रो मंत्र कोन, जीवन रो लक्ष्य कोन, से खोजुचंती, but they are not able to get that. So here we are telling the view of the writer H.W. Longfellow. That means the poet sees life from an optimistic outlook. गोटे आशावादी से life को लेकर बहुत आशावादी. He has aim, all the things he has. To him this life is full of possibilities. Life is fully covered with the possibilities. There are purposes, there are aims, there are goals we will have to achieve. It is our duty, it is the duty of a young man to achieve. As we can achieve higher goals by making the full use of our time, and we will have to use our time, utilize our time. Unless taking rest, we should go and we should achieve our goal, and we should search what is our aim. It is our responsibility, the writer has suggested here through the stanza, and we will have to use our power. We should not take rest. That means we should not. Semane hochunde dead. They are dead, those who take rest, those who waste their time unnecessarily, those who waste their time. Indirectly we can say, if we look through inward eyes, they are wasting their time. That means their soul is dead. Semane already mori jaichonti, jo mane time waste କରୁଛନ୍ତି se kotha କହୁଛନ୍ତି. But a number of persons are there, those who see the life in a pessimistic way. Pessimistic पहले निराशावादी लोग माने, those who don't believe upon life, those who don't believe upon work, duties, responsibilities, they avoid such things. Semane se bhaliya jinsu ko avoid karanti, and we can see the history of those people that they cannot be succeeded in their life if they do the same. ekotha कहछि जदि जणे सब बेले अलसुआ जोटा कहछि लेजी, स्लम्बर कहले लेजी जे रहइबो, if someone is not active in the life, then he or she cannot achieve his goal or her goal. So here the writer instructs us or to the readers to make the most out of this life and inspire us to participate in the work and activity of life. समस्त जीवन रे भाग नियो, and never say about your mournful numbers. Mournful numbers कहले दुखर कहानी जमा भी को नहीं, and the life is there. There are full of difficulties, there are full of troubles, there are full of issues, and also there are goals, there are achievements that we will have to achieve. It is our duty, and we cannot say that the life is an empty dream. आमे कहि परिबा नाही ड्रीम नाही, स्वप्न नाही, गोल नाही, किछि लक्ष्य नाही बोली कि आमे कहि परिबा नाही. A lot of things are there, we will have to find it out, and we should never wander here and there like a purposeless man and intention. बा आमे कहि परिबा गोटे उद्देश्यहीन लोक भाबरे आमे जदि बुलिबा ताहले we cannot see the real meaning of life. Here it is also suggested by the writer, we think the life is quite different. We watch like this, but in real, if we go deeper and deeper, we can get the real taste of happiness if we achieve our goals. And how we can be able to achieve our goal? केतेबेले आमे हमर गोल अचीव करि परिबा जेतेबेले आम पाखरे साहस अछि, शक्ति अछि, and suppose we have aim, आम पाखरे जति aim अछि, लक्ष्य अछि, ताले we will never
have much time to take rest. We cannot act like a dead. We should be active all the time, and then only we can achieve our goal. से कहुची मत दुखर कथा कह ना that young man was saying something to the psalmist. से लोक को कहूँ सी life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers. से एठी से psalmist बा राइटर एठी कहउछन से यंग मैन को नेवर से मी मन फुल मते दुखर कहानी सुनो नाही, because it is not an empty dream. The life is not fully covered with the empty dream and unhappiness and shadow. आम कही परिबा सरोज दुखर केवल परिपूर्ण नाही. द लाइफ विल हैव टू फाइंड से जीवन को हमको बाछियो पड़ियो. व्हाट वी शुड डू, वी शुड गेट व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. आमर दायित्व कोन, आमर कर्तव्य कोन, से विषय हमको हृदबोध करबा पड़ियो. देन ओनली वी कैन अचीव आवर गोल, एंड आफ्टर दैट वी कैन गेट द रियल टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस. खुशी सेते जानि परबा आम जेते बेले आमर लक्ष्य पथरे आगे जीवा, एंड वी शुड नॉट एक्ट लाइक अ डेड मैन. आम जदी गोटे डेड मैन रो एक्ट करबा. स्टांजरे राइटर कहते ओडिया रे कहबाकू गले, इफ वी read in Odia, or if we understand it in Odia, that a person who spends all his time sleeping is already dead. So here he suggests to the readers through his words and his stanzas and his message. से कहते टेल मी नॉट मोर्नफुल नंबर्स, मत दुखर कहानी कौन है. लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम. वी कैनॉट से द लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम. ये किसी ना बोलिक जो आम भावुँ, and we cannot say the life is meaningless. Those who speak like this, they are already dead. That means they misguide others. से माने कौन करती अन्य को misguide करती about the life. एक कथा कहछि, and he assures that life is not so saddy. The life is not that much saddy as we think. आम जमते भावुँ लाइफ एते दुख परिपूर्ण. It is not like that. And it is not, आम कही परिबा, it looks like and it has much more potential than we think of. आर बहुत किछु उद्देश्य रही ये राइटर कहते. बट वन थिंग it is suggested by the writer, we should never act like a dead. आम जदि मरिला भली एक्टिंग करवा, then the life will not be activated and we cannot go ahead. We cannot find our future, we cannot find our aim out, we cannot find our destination. आम आम लक्ष्य तल दिगरे पहुँचवा नहीं. सो से कथा कहते तुम जदि मत कहूच जे लाइफ इज फुली कवर्ड विथ द शेड्स एंड शैडोज एंड सरोज, दुख छाई अंधकार परिपूर्ण, it is not like that. The writer says here to the readers through his message. ए मेसेज माध्यम से कहते लाइफ इज there are two sides of a coin. गोटे अच्छे दुख, गोटे अच्छे सुख. इफ वी हैव that unhappiness, one fine day we will get happiness. जदि आमर पाखरे अच्छी दुख, दिन ना दिन आम पाख सुख आसो. बट ता बोली if we stop there, आम जदि रही जावा, we cannot achieve our target, then your life will be completely dead. तुम जीवन यात्रा से ठाऊ पे जीव, and things are not what they seem. तुम जहाँ भावुच the life is meaningless, not like that. You will have to act like an active person. You should have potential, you should have power, you should utilize your talent. Then only we can achieve our goal. सेतेबेले आमर लक्ष्य स्थल पहुँची पारिबा जेतेबेले आमे आमर पावर को ठीक भाव यूज करिबा, and if we can get the real meaning of the life. I am moving to the second stanza, that I am telling you the story of second stanza. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust thou returnest, words not spoken of the soul. We can write two meanings out here. One is earnest. The meaning of earnest is life is so quick, it is very quick, it doesn't wait for anyone. The journey doesn't wait for anyone. काहाको जब अपेक्षा करे ना, सेमती ग्रेव. The meaning of grave होची, the meaning of grave, samadhi, and death, that is grave. Dust thou art, to dust thou returnest. You should write the meaning of this sentence. It is a phrase which is collected from Bible and Christianity. We can say Bible ru collect करा जाइथिबा गोटे phrase, and what it says I am telling you. मु आ विषय कहूची आर मीनिंग टा भी मु कहि देबी, बट one thing you should write on it. आ ऊपर लिखि परिबा हम गोटे जिंस that it is collected from Bible and Christianity. So was not spoken of the soul. Here I am coming with the meaning of this stanza. मु आर stanza र अर्थ कहूची life is real. We cannot say life is baseless, life is useless. Life is useless आम कहि परिबा नै, and life is not meaningless and taskless बोली के आम कहि परिबा नै. The life is real, the journey is real. A journey, a जीवन यात्रा होची, whatever it may be, whatever circumstances you face, you will have to go to the destination. तुमको लक्ष्य स्थल रे पहुंचवा पड़िबो. You are bound to do that. आमे बाध्य समझते, we are forced to do so. But
It is our responsibility that how we will utilize our time. Sometimes what we feel, आमे बेले बेले कौन feel करूँ, the meaning I am telling you, and the grave is not its goal. आमे भाबू one fine day we have taken birth today, आज आमे जन्म नहीं छु, one fine day we will die, आमे दिने ना दिने मरिबा. आमे कौन भावछु, all the days will be full of, or all the days must be full of happiness and enjoyment, and in this way we also stop somewhere and we waste our time by taking rest हो जे कौन प्रकार काम हो. That means in this way your life will be dead. तुम जीवन यात्रा मरला सदृश हो अपूरण ही रही जदि आम बुझा लाइफ जदि किसी ना जीवन यात्रा जदि किसी ना जदि बुझा आम देन इट विल बी इनकम्प्लीटेड आम कहीपर इट विल बी इनकम्प्लीटेड कंप्लीट हेबो ना लाइफ द जर्नी कैन नॉट बी एंडेड आम कहीपर दैट वी मस्ट फॉलो others means क्या फॉलो करने कथा कही that those who have done extremely well for the society and after even their death they are remembered. सेमान को मने पका जाए थे after even their death. जमती we can give an example of Mahatma Gandhi, APJ Abdul Kalam, who was known as missile man, Netaji Subhash Bose. Those were the persons. Similarly, we have taken birth as a human. It is our fortune, amar bhagya. We are lucky enough that we have taken birth as a human. Moniso bhavara ame janma leichu, and that is why we have some responsibility. आम पाखर किछि दायित्व अछि, and we should never think आमे केबे चिंता करिवा नै जे मरिवाटा होछि हमर लक्ष्य. मरि गले हमर जीवन सरी गला ता पूर्वरु हम कोन करिवा पड़ो एन्जॉयमेंट करिवा बोली जो भाबुचे. we should never think about it or think of it. आमे से कथा भाबा नै. we should know the life is not bastless. life एमती फालतू रे आसी नाही. life गोटे कदर्ज जिंस हो. it is there is some meaning, तार किछि अर्थ अछि, and it is our responsibility to find out the meaning of life. जीवन रो अर्थ कोन हमको बुझिबा को पड़िबा, and then we will have to find out our destination. And we should never think about the mournful numbers. आमे दुखर कहानी कहवा नै काकू, दुख कथा कहवा नै काकू, and we must not think about it. आमे दुखर कथा विषय जमा चिंता करबा नाही. we will have to face all the troubles, all the difficulties. आमे समस्त प्रकार जिंस को फील करबा पड़िबो, सब जिंस फेस करबा पड़िबो. According to the writer, the life is so serious, it is real. एटा होची बहुत गुरुत्वपूर्ण जिंस, not baseless or useless. आमे कहि परिबा it is not baseless. So we should not take this life lightly. As a human we have taken birth. हम जन्म नहीं छु मनीष भाव रे आको हमें lightly नेबा नाही. And he has said to the human civilized मनुष्य सभ्यता को सेठी कहिसंती that we have taken birth for some reason. आमे नहीं छु जन्म किछि कारण पय जन्म नहीं छु, and we cannot make it, or we should never make it worthless करवा नहीं कि valueless करवा नहीं. we have some value. आम पाखर किछि मूल्य अछि, आम पाखर किछि पावर अछि, and we have some responsibilities. before our death we must do something for the society or for the people. लोक मानको पई हो, सराउंडिंग पई हो, सभ्यता पई हो, आम किछि करिया पड़ियो by which people will remember. our next generation will follow us. आमको फॉलो करिवे. so एटी को जाय छी after even your death you are remembered, but it is your duty that how, and it is your responsibility, तमर दायित्व या जे what you will do by which others will remember you and they will remind you. से माने मन रखिबे एवं मने पकेबे. एटी को आइछि dust thou art to dust thou returnest. that means we have taken birth from that dust, and after our death we will go to that dust. आमे से it is a famous phrase which is collected from Bible. As I told you, all the English poems and many things which are related to English language written by other authors. आमे जो कोच ऑथर मान को द्वारा लिखा जाइथिबा विभिन्न प्रकार इंग्लिश जोटा अन्य राइटर माने फॉरेन राइटर माने लिखती काइंड ऑफ थिंग आई कैन से या कोई परिबा जे इट इज बेस्ड अपॉन द Christianity and the Bible, and that famous phrase is collected from Bible. Bible to collect कर जाइथिबा गोटे उक्ति जहा या सोचौछि that you have taken birth from that dust and one fine day you will go to the dust. से भूमि रे तमे जन्म नैछो आ आफ्टर योर डेथ से भूमि को ही तमे जीव जार अर्थ होछि एटा dust thou art to dust thou returnest. so we should not waste our time. we should not act like a dead. आमे गोटे मरि जाइथिबा लोक भली आमे एक्टिंग न करिकि we will have to find out our aim and destination, and we should never think of the grave. आमे हमर ग्रेव को गोल बोल करी न भाबिकी हमको बहुत जिंस करिवार बाकी अछि. ए कथा कहै छी इज ओनली स्पोकन ऑफ द बॉडी, एंड कथा कहै छी जे आवर बॉडी only goes to
the dust. It comes from the dust, it goes to the dust. After the death, before the birth माने जन्म पूर्व आम भूमि आसू जन्म है माने मृत्यु बेलू आम जाऊ कौटी को आम ग्रेव को जाऊ माने आम समाधि पीठ को जाऊ विच इज ऑल्सो मेड ऑफ डस्ट जोटा भी डस्ट तैयारी. सो इट इज एटा केवल मनुष्यर बॉडी विषय कहुई बट द सोल ऑफ द मेन द लास्ट लाइन विच वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल ता कथा कहुई माने बॉडी पाई कहुई दैट जोटा कि से ग्रेव को जाए समाधि को जाए किंतु ऑन द अदर हैंड द सोल इज स्टिल अलाइव. जीवन आत्मा किंतु बंचिक थाए बॉडी जो आत्मा रही मनुष्य आत्मा इट स्टेज अलाइव ये बंचिक थाए बट वी शुड थिंक वी शुड थिंक ऑफ दैट सोल आम से आत्मा कथा चिंता करवा. पीपल विल रिमेंबर अस हमको मन रखिए केतले जदि आम भल काम कर पीपल ऑल्सो विल रिमेंबर अस इफ वी हैव डन सम बैड वर्क्स. आज आम जदि किसी खराब काम कर दिने आमको लोक मन पकड़े ए काम करला से बट इफ वी मेक और इफ वी वांट टू मेक इट सो होली आम जदि आपको पवित्र बनवा चाहिए ताले विल हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड आवर सराउंडिंग एंड आवर सोसाइटी आम समाज पर किसी भल काम करार अच्छे देन ओनली पीपल विल रिमेंबर अस पीपल विल रिमाइंड अस आफ्टर आवर डेथ. So the poet makes it clear that he believes in the existence of the soul after our death. से ये कथा कहते do kind of works by which others will remember you after your death and they will remind you after your death. तुम मरी सारिबा पर भी लोक मान तुमको किभली एंजॉय कर तुमको किभली मने पकेबे से कथा हमें करबा दरकार से काम करबा दरकार. एंड जो मरिबा कथा कहिछि मरि जवा कथा कहिछि ओनली योर बॉडी डाइज तुमर बॉडी मनुष्यर देह मरि थाए नॉट द सोल. इट कहिछि आत्मा बंची कर थाए एंड इट इज आवर ड्यूटी टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी व्हेन वी आर अलाइव. हम जेतेबेले बंची कर अछु सेतेबेले हमें सोसाइटी में किछ करबा दरकार से कथा से कहिछन्ती. सो हियर वी कैन से फॉर दिस स्टांजा लाइफ and आम कहीपर द ग्रेव इज नॉट द अल्टीमेट गोल दैट मीन्स द डेथ इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल इन द लाइफ. जीवन एकमात्र लक्ष्य जो मरीजा ता नुह वी शुड फाइंड आउट आवर एम एंड डेस्टिनेशन आमर लक्ष्य को आमर डेस्टिनेशन को हमको पाइबा पड़ो. दैट इज व्हाट सजेस्टेड बाय द राइटर हेनरी ऑफ द लॉन्गफेलो थ्रू दीज लाइन्स टू द रीडर्स एंड टू द यंग मैन हु इज कंप्लेनिंग टू द राइटर एंड दैट सामिस्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज एंड what does it mean. And I am not able to find the meaning of life because as per the view of that young man the life is fully covered with the sads and shadows and sorrows. केवल छाई अंधकार और darkness रे भर्ती होकर अछि. And after that the writer himself started speaking about and he started telling about the life and here the story. So it is a story of second stanza. We are moving the next. So not enjoyment, not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us further than today. So I am defining the stanza in brief that not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us further than today. That means we have to act every day, we have to perform every day. And if we waste a single day, we cannot achieve our destination. We will be dead once again. आमे आउ थरे मरि जिबा. And if we stop once, आमे जदि थरे रहि गले, we cannot achieve our dream, we cannot achieve our goal, and we cannot be able to find our destination. एटी कहछि थर्ड स्टांजा कथा कहछि not enjoyment, not sorrow. Actually it should be controlled in a balanced way. दुख आ सुख इट इज टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. आम जानूँ यहाँ हूँ दुईटी पार्श्व गोटे मुद्रार बट इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ आमर दायित्व टू कंट्रोल इन अ बैलेंस वे दुईटा जाक समान गति समान पथरे आमको नेबाक पड़ो. एंड इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ओपन अस. आम जदि खाली एंजॉय करवा वी विल मिस समथिंग. एंड इफ वी always speak about sorrowful or mournful numbers, then another part will be missed. So it should be maintained in a balance way. आपको गोटे बैलेंस करके चलवा पे राइटर इट सजेस्ट करछंती. इट इज रिटन हियर इट इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे. आ जदि आम एभली करवा इट कह जाय द पोएट सजेस्ट दैट नाइदर एंजॉयमेंट नॉर सरो शुड बी आवर अल्टीमेट एम और वे ऑफ लाइफ. केवल एंजॉयमेंट और सरो आमर न रहा माने बैलेंस चलवा दरकार से कहते यहाँ. एंड दैट विल बी कल्ड एन आइडियल लाइफ. ताको ही कह गोटे आदर्श जीवन जदि आम बैलेंस वे नेबा एक कथा कहते राइटर. सो
but to act that each tomorrow finds us further than today. That means we will have to act every day, we will have to perform every day, but आमको प्रतिदिन काम करिया पड़िबो, प्रतिदिन आमको, and we will have to work dedicatedly, निरंतर परिश्रम करिया पड़िबो, then only we can achieve our goal. निरंतर परिश्रम बोली कहले without taking rest आम कहि परिबा, if you pause for some times then we will waste a crucial period, आम गोटे crucial time को waste कर देबा, and it is completely dependent upon us that how dedicatedly we perform our work, केते समर्पित भाव भाव रे हमरे कार्य करछु, that is counted, सेटा को लोक माने भाबंती बा सेटा ही एक्चुअली हमको दिने फल देई थाए, and one fine day we are succeeded, आम सक्सेस हेई थाउ, and one fine day we can get success, आम सफलता पाई परिथा, and that is why it is written here, but to act that each tomorrow you cannot stop somewhere, तमे रहिबा पय स्थान नाही, you will have to perform, you will have to work dedicatedly. And आमे कोन भाबछु, yes, today the day came and the evening will come, and soon after that the night will come and we will go to bed, that we think आमे कोन करछु, दिन पर संध्या आसला, संध्या पर राति आसला, राति पर आमे खाइ कर विश्राम नै जाउछु, and we perform our work like this, आमे ए बळी भाबरे हमर काम को बुझुछु, आमे जानछु ए बळी भाबरे कामटी सरी जाउछि, but we should never think that it is not a physical distance, एटा गोटे शारीरिक दूरत्व नुह जाको आमे अतिक्रम कर दबा, it is kind of distance which is too difficult task to achieve or to complete, एटा होछि एभलिया गोटे journey which cannot be completed in one single day, बा आमे कोइ परिया गोटे मात्र एक मात्र दिन रे के कंप्लीट हबो नाही, the distance it is आमे कोइ परिया दिन को दिन डिस्टेंस बा गुरुत्व दिन को लाइफ रो गुरुत्व बढ़ी बढ़ी जाउची, so most important thing it is we will have to be much talented, much skilled, and we will have to better experienced, एक कथा कहैछि, आम प्रतिदिन स्किलफुल हेबाक पड़िबो, प्रतिदिन एक्सपीरियंस हेबाक पड़िबो, प्रतिदिन मैच्योर हेबाक पड़िबो, प्रतिदिन टैलेंटेड हेबाक पड़िबो, then only we can find our goal and we can achieve our goal, and we one fine day will be succeeded, आम हमर जीवन रे सुख होई परिबा बा आम सफलता को धरि परिबा. So here it is written that एक कथा भी कह जायछि, माने each day we will have to perform, प्रतिदिन हमको कार्य करबा पड़िबो, and there is no time to take rest, and if we waste our time जदि गोटे दिन विश्राम नै जिबा ताले we will waste our life, हमर जर्नी रे गोटे क्रूशियल पीरियड टी कोन हो नष्ट होई जिवो, and we should never let it be destroyed, आको हमें ध्वंस हेबा पय देवा नै, एक कथा कह जायछि, that means every day is quite distant, सब दिन दूरता बढ़ी बढ़ी जाते, it is enhanced day by day, it is increased day by day, the distance cannot be covered in one day, गोटे दिन रे केबे कोनसे दूरता अतिक्रम करा जाय पारे नाही, and it is our responsibility that we should find out the distance, प्रथमे हमें दूरता को देखिबा को पड़िबो, and then we will have to perform our work. एक कथा कह जायछि, प्रतिदिन दिन को दिन हमर लक्ष्य तळ बढ़ी बढ़ी जाय थाए, बा हमें कोइ परिबा हमर ड्रीम आउरी आगु को बढ़ी बढ़ी जाय थाए, and we should crave for going forward further each day in our journey of life. हमें केबे भाविबा नै जे आज रो कर्मटी मोर सरी गला, आई कैन टेक रेस्ट नाउ, वर्तमान में विश्राम नै पारिबी, किंतु इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज मोर डिस्टेंस इज देयर टू बी कवर्ड, आउरी डिस्टेंस अछि, आउरी दूरता बाकी अछि टू बी कवर्ड, वी शुड नेवर फॉरगेट, एटा हम भूलिबा नै. द लाइन सेज दैट फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, आज ठारू काली रो दूरता आउरी अधिका अछि, ताठी ता पर दिन आउरी काम बाकी अछि, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो टाइम टू टेक रेस्ट, एंड इफ यू टेक रेस्ट यू विल बी लाइक अ डेड, जदि हम अधिक विश्राम नेबा, एंड इफ वी फील लेजी इन आवर वर्क, इफ सपोज हम कहबा इफ वी डोंट वर्क प्रॉपर्ली एंड डेडिकेटेडली, वी विल बी बैक, आम पछ घुंचा हो, आम पछुआ हो, एंड समस्ते आसिक आमको आगू काटिकी पड़ोथे, एंड वी विल स्टॉप समवेयर, वी कैनॉट गो हियर, आम आगू को जापर ना, एक कथा कहुई, एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वाचिंग.